Hello students, in previous video we have started lesson number 5 of science, that is birds, beaks and claws. And we have discussed that birds do not have teeth to eat their food. So they use their beaks and claws to catch and eat food. And we are discussing about the feeding habits of the birds, and we have also discussed about the beaks. So beaks help the birds to tear, bite, chisel and crush the food, and the shape of the beak is according to the food habit of the bird, कि bird कैसा खाना खाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी beak होती है. So let us try to understand why the beaks are of different shapes according to their food habits. Let us do one activity to understand it clearly. You can see here we have 3 bowls, one having rice, one having soup and one having noodles. So 3 bowls हैं और उनमें हमारे पास rice, soup and noodles हैं. And we have 3 types of spoons also, fork, this and 2 types of spoons. So which spoon you will use to eat rice? Do you eat this fork? No, it is not possible. हम इससे खा ही नहीं पाएंगे. And which one is the suitable for eating the rice? So we will use this spoon to eat the rice. The next is your soup. So which one is the best type of spoon which will be suitable to take the soup? So we will use this spoon which is suitable for soup. And now noodles. So is it possible to eat the noodles with the help of these 2 types of spoons? No, it is not possible. We will use the fork. So to eat a particular type of food, we need different types of spoons. So similarly, birds also need special type of beaks. So their shape of their beak is according to the food habit of the bird. That means what type of food they are eating, according to that they have their beak. क्योंकि अगर हम नूडल्स को इन स्पून से खाएंगे तो इट इज नॉट कंफर्टेबल, और अगर हम इन 2 चीजों को फोर्क से खाएंगे तो इट इज राइस को और सूप को, तो इट इज नॉट suitable and it is not possible. So that's why the birds have different types of beaks. Now today we will discuss about the types of beaks. So first of all we will discuss about the crushing beak. So you all know what do you mean by crush. किस चीज को पीस देना, क्रश कर देना, that is crush. So crushing beaks. So birds like sparrow, pigeon have a short and hard beak. You can see here in the picture their beaks are short but they are very hard. So their beaks are short and hard. They use it to crush seeds and grains. You all know that sparrow and pigeon like birds eat seeds and grains. So they have such type of short and hard beak. Why? Because they crush the seeds and grains and make them soft before eating. तो इस हार्ड और शॉर्ट बीक से वो इजीली पिक कर लेते हैं ग्रेन्स को और सीड्स को, और उसके बाद इस हार्ड बीक से वो ग्रेन्स एंड सीड्स को क्रश कर लेते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, एज you do
व्हेन यू च्यू द फूड व्हाट यू डू, आप फूड को सॉफ्ट बना देते हैं बिफोर स्वेलोइंग। आप कोई हार्ड चीज जब च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, आप उसको क्या करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं बिल्कुल, और सॉफ्ट बना देते हैं। ऐसे ही होता है। सिमिलरली दीज बर्ड्स ऑल्सो क्रश द सीड्स एंड ग्रेन्स बिकॉज दे आर वेरी हार्ड, सो उनको क्रश करके वो सॉफ्ट बना देते हैं बिफोर ईटिंग। So they have short and hard beak. Next is your curved beak. You can see here a picture of a parrot. Observe the beak carefully, what type of beak it have. So it has a curved shaped beak. उसकी कैसी होती है, curved shape होती है. You can see here the difference between the beaks of pigeon and पैरेट। पिजन की शॉर्ट एंड हार्ड बीक है, वेयर एज पैरेट की लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक है। नाउ बर्ड्स लाइक पैरेट हैव अ कर्व्ड बीक। व्हाई? बिकॉज दिस हेल्प्स देम इन क्रैकिंग द नट्स एंड फ्रूट्स। सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन द फूड दे ईट। Pigeon and sparrow eat seeds and grains, whereas parrot eats nuts and fruits. ये nuts and fruits नहीं खाते। So according to their feeding habit, they have their beaks. So parrot nuts खाता है, nut is very hard, और उसको crack करने के लिए they have a curved beak. And it also eat fruit, तो उसको बाइट करने के लिए they have a curved beak. So next is your piercing and tearing beak. Some birds like eagle and vulture eat flesh. Such birds have a strong, hard and curved beak that helps them to tear the flesh. So you all know eagle, vulture क्या खाते हैं? They eat flesh. ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। vulture तो आपको पता ही है, डेड एनिमल्स को खाती है। ईगल अपना शिकार करके खाता है, फ्लैश खाता है, रैट्स को खाता है, माउस को खाता है, स्नेक्स को भी खाता है। तो ये फ्लैश खाते हैं, और ये स्पैरो बर्ड्स एंड पैरट की तरह ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स नहीं खाते। ये फ्लैश खाते हैं, दे ईट फ्लैश। सो फ्लैश खाने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड यू कैन सी हियर कर्व्ड बीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कर्व ऑफ द पैरट एंड दीज बर्ड्स। उसकी अलग टाइप का कर्व होता है, इनकी लॉन्ग होती है, हार्ड, आगे से थोड़ी सी कर्व्ड बीक होती है, जिससे कि ये फ्लैश को टीयर कर सके। विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड कर्व्ड बीक दे टीयर द फ्लैश। फ्लैश को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, सो दैट इट विल बिकम इजी टू ईट। उसके स्मॉल पीसेस करके वो खाते हैं। ये जो आपकी आगे से जो बीक है, दैट इज वेरी पॉइंटेड and curved. You can see here in the eagle, in the pictures. Observe the beaks of eagle and vulture carefully. So this type of beak is called piercing and tearing beaks. So there are some birds which can imitate our voice. Parrot is one of them. So you all know ये जो parrot है वो हमारी साउंड्स को इमिटेट करता है, हमारी वॉइस को इमिटेट करता है। हम बोलते हैं, वो भी रिपीट करता है जो हम बोलते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी पैरट्स हु स्पीक्स लाइक अस, दे इमिटेट आवर वॉइस। सो पैरट इज वन ऑफ them. Crows and hens have beak that help them to eat a variety of food
like meat, fruits, greens and insects. So crows and hens ऐसे birds हैं जो ग्रेन्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, जो फ्रूट्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं. दैट मीन्स वो सारे टाइप का फूड खा लेते हैं. वो फ्लैश भी खाते हैं लाइक ईगल एंड वल्चर मीट दैट इज, और वो पैरट की तरह फ्रूट्स भी खाते हैं और पिजन एंड स्पैरो की तरह ग्रेन्स भी खाते हैं. सो दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ बीक. तो उनकी एक अलग बीक है, इस टाइप की होती है जो इन सब को खाने में हेल्प करती है. बट बाकी जो बर्ड्स हैं उनकी पर्टिकुलर टाइप की बीक होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही खाना खाते हैं. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रशिंग बीक, कर्व्ड बीक and piercing and tearing beak, and we have also discussed why there is a need of different types of beaks for the bird. Thank you.